Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lysosomes. Lysosomes are the other organelles which are present in the cytoplasm of the cell, and the other name or the function of the lysosomes could be related with the stomach of the cell. So it could also be called as the stomach of the cell. Why the stomach of the cells? Because stomach has a low pH, and the low pH means all the biomolecules which are directed to the lysosomes are being hydrolyzed there. So the stomach of the cell means it is a suicide bag, it is a suicidal sac, means every biomolecule, either it's carbohydrate, it's a lipid, it's a any other protein, they could be they are going to be hydrolyzed in the lysosomes. So lysosomes definitely have some enzymes which play a role in the digestion of these biomolecules. These could be proteinases in case of proteins, these could be hydrolases for all the biomolecules, this could be lipases for the lipids, this could be nucleases for the nucleic acids, etc. So the details of the lysosomes, first of all, the structure of the lysosomes. Here the lysosome is a membrane bound bodies, spherical or ellipsoidal in shape, depending upon the particles entry and the function that is performing. It could be spherical in shape and ellipsoidal as well. Here in the structure of the cell you can see the lysosome, which is membrane bounded small bodies, and the zooming out shows the spherical shape of the lysosome. As I told you before, lysosomes contains digestive enzymes which are called hydrolases. These could be different for different biomolecules, like these could be proteinases in case of proteins, these could be lipases in case of lipids, they could be amylases, they could be carbohydrate digesting enzymes, they could be esterases, they could be nucleases, etc. So all these list of enzymes are being present in the lysosomes and plays a role of hydrolysis as a hydrolytic enzymes. That's why lysosomes are called as the stomach of the cell. So enzymes are produced in the rough endoplasmic reticulum. They are transported to Golgi apparatus, released from the Golgi, and then are sent to the lysosomes. This is the overall scenario which is taking place in the cell, which we discussed yesterday. Enzymes are going to be produced. Enzymes are proteins, so proteins are produced in the rough endoplasmic reticulum on the ribosomes, transported for the packaging to the Golgi apparatus. Then after release from the Golgi through the small vesicles, they are sent to the lysosomes where they are being digested. So it means if there is a problem in the lysosomes, then the degradation will not take place properly, and it could lead to number of diseases which are known as lysosomal storage diseases. So the overall mechanism of action of lysosome, in the lysosome the targeted biomolecules or targeted enzymes are being directed. Glycosylation is one of the target of the proteins which is given on the Golgi apparatus prior to the entry to the lysosomes. मतलब क्या इस बात का, हमारे पास जितनी भी प्रोटीन्स बन रही हैं गोल्जी apparatus में, दे आर बीइंग टैग्ड, उनके ऊपर कोई ना कोई सिग्नल अटैच होता है जो कि उसको डायरेक्ट करता है टू द लाइसोसोम. अगर ये अटैचमेंट नहीं होगी तो इट विल लीड टू द मिसगाइडेंस टू द प्रोटीन्स. मीन्स जो आपकी प्रोटीन ने डायरेक्ट होना था लाइसोसोम में, वो कहीं दरमियान में रह जाएगी, वो कहीं रिलीज़ हो जाएगी, वो लाइसोसोम में डिग्रेडेशन के लिए
नहीं आएगी। तो हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ द एंजाइम्स विद द mannose. Mostly the proteins are being tagged with the mannose residues. Mannose is a monosaccharide. When the enzymes are being attached with the mannose, it forms mannose 6-phosphate with the help of phosphotransferases enzymes. Enzymes then transported to the lysosomes. These enzymes which becomes tagged with the mannose residues and becomes mannose 6-phosphate, and mannose 6-phosphate is the target to lead these proteins to the lysosomes. They are being transported to the lysosomes. But what happened when there is a defect in the mannose 6 residues or the phosphorylation of mannose, then it cannot direct the protein to enter the lysosome. So enzymes when first released condense with the acidic endosomes and become primary lysosome. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सिक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं वो प्राइमरी लाइसोसोम्स बनते हैं, और जब उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज़ होती हैं देन दे कुड बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम. तो लाइसोसोम दो तरह के होते हैं, एक जो कि सबसे पहले बनते हैं जिसमें हमारे पास जो प्रोटीन है वो टैग होके अटैच होके एसिडिक एंडोसोम बनाती है, तो वो प्राइमरी लाइसोसोम कहलाते हैं. लेकिन जब उनके अंदर हमारे पास हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है देन दे कुड बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम. और सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो है वो डिग्रेडेशन करवाते हैं. डाइजेस्टिव एक्टिविटी इन लाइसोसोम कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. अब जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम में हो रही है, इट कुड बी ऑटोफेगी और इट कुड बी हेट्रोफेगी. ऑटोफेजी और हेट्रोफेजी के नाम से आपको पता चल रहा है कि ऑटोफेगी जो उसके अपने अंदर वाले सारे इटसेल्फ जो डाइजेशन वो करवा रहा है, लेकिन जो अदर बायोमोलिक्यूल्स टैग होके आ रहे हैं वो जो हैं वो हमारे पास हेट्रोफेगी होगा, वो अदर देन जो आपके लाइसोसोम के बायोमोलिक्यूल्स हैं. अब मैंने बताया आपको कि जो लाइसोसोम्स होते हैं इनका रिलेशनशिप होता है डिफरेंट डिजीज़ के साथ, बिकॉज दीज आर द एंड पॉइंट वेयर ऑल द बायोमोलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी डिग्रेडेड. If they are all the biomolecules are not being targeted properly to the lysosomes, they could lead to the number of diseases. One of the diseases is gouty arthritis. It leads due to the hyperuricemia. Okay, what is this uricemia? Uricemia is the end product of प्यूरिन डिग्रेडेशन. प्यूरिन आपकी क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं. आप न्यूक्लिक एसिड्स खाते हो, न्यूक्लिक एसिड्स में प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स होता है. जब वो बॉडी में कोई भी चीज़ बनती है तो ऑब्वियसली वो डिग्रेड भी होती है. तो प्यूरिन्स जब डिग्रेड होती हैं तो उनके एंड प्रोडक्ट में हमारे पास क्या मिलता है, यूरिक एसिड. आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि जो गाउट के पेशेंट्स हैं या जोड़ों के दर्द के पेशेंट हैं उनको हाई प्रोटीन डाइट बंद हुई भी होती है, उनकी रिस्ट्रिक्ट की भी होती है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्यूरिन्स होती हैं जो कि ज़्यादा खाने से ज़्यादा ब्रेक डाउन होती है और यूरिक एसिड इंक्रीज़ होता है. अब क्या होता है कि जब ये यूरिक एसिड इंक्रीज़ होता है, जब यूरिक एसिड के लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज अ हाइपरयूरिसीमिया. एंड व्हेन द यूरिक एसिड एंटर्स द सेल, अब यूरिक एसिड सेल में एंटर होगा तो वो डैमेज करेगा लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स को. वाई? बिकॉज यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है. जो यूरिक एसिड बॉडी के अंदर आता है वो हमारे पास नीडल शेप्स में होता है. तो जब वो हमारे पास नीडल शेप में सेल के अंदर एंटर होता है तो वो जब उसकी क्वांटिटी एक लिमिटेड अमाउंट जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जानी है उसके अलावा वाली वो होता क्या है कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी से एलिवेट हो गया, हमारे ब्लड में जितना एक्सक्रीट आउट होना था उसके बाद जो बच गया वो एलिवेट हो गया. अब यूरिक एसिड क्योंकि क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है तो वो सेल के अंदर एंटर होता है. सेल के अंदर जैसे ही वो एंटर होता है तो वो डैमेज करता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से जो जितने भी हाइड्रोलेजेस है लाइसोसोम के वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेटरी जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो कॉज करते हैं, उसको एग्रीवेट करते हैं, जो कि इस कंडीशन को लीड करते हैं जिसे हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस. आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स. This is one of the condition in which lysosomes are associated with the diseases, and which one is this disease? This is gouty arthritis. And what is this gouty arthritis? Gouty arthritis is due to the
higher level of uric acid. What is uric acid? The breakdown of product of purines. What are these proteins? These are present in high quantity in your different foods, in proteins, in your meat, in your lentils, etc. And when they are present in elevated amounts, they could cause the lysosomal membrane, and due to the damage of the lysosomal membrane, all the hydrolyses which are present in the lysosomes, they could be released and aggravate the condition which is known as gouty arthritis. The other diseases which are associated with the lysosomal problems are called as the lysosomal storage diseases. Specific deficiencies of lysosomal enzymes may result into Muco Polysaccharidosis. Muco Polysaccharidosis are different कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड डिसऑर्डर्स. आपको पता है जो आपके लाइसोसोम है उसके अंदर प्रोटीन ने भी डिग्रेड होना है, उसके अंदर लिपिड ने भी डिग्रेड होना है, उसके अंदर सब चीज़ों ने डिग्रेड होना है. तो जो म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है, दीज आर द मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स ऑफ सम ऑफ योर गैग्स. व्हाट आर दीज गैग्स? दीज आर योर ग्लाइकोप्रोटीन्स. अब होता क्या है हमारे पास, जब ग्लाइकोप्रोटीन सही तरीके से बॉडी में डिग्रेड नहीं होती तो it could lead to the accumulation of one type of your carbohydrates which are known as mucopolysaccharides. And the overall scenario, overall collection of the disease, or overall you can say number of diseases associated with this carbohydrate metabolism group of diseases is known as mucopolysaccharidosis, and this is the defect in the carbohydrate metabolism. And what happened when different lipids are not being degraded in the lysosome? It could lead to the lipid storage diseases. This could be gangliosidosis, this could be cerebrosidosis. So lipidosis, mucopolysaccharidosis, these are all the defects of the lysosomal storage diseases, which we will study differently in the lipids chapter, in the carbohydrate chapter. But here, because all the lysosomes contains proteins, lipids, and all the other biomolecules, so any defect in the degradation of these biomolecules could lead to the lysosomal storage diseases of specific biomolecules. What are these mucopolysaccharidosis? Long chains of sugars that are found throughout the body, often in mucus and in fluid around the joints, commonly called glycose aminoglycans. These are conjugated carbs. So अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस हैं, ये हमारे पास लॉन्ग चेन शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, स्पेशली इन द म्यूकस, और जो साइनोवियल फ्लूइड्स होता है हमारे पास, जो जॉइंट्स के इर्द गिर्द फ्लूइड होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं. तो ये कॉमनली इनका नेम जो है वो गैग्स होता है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस, और ये कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं. और इसी तरीके से जो आपके लिपिडोसिस हैं, दीज लिपिडोसिस आर ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म. और वो भी हमारे पास डिफरेंट क्लासेस, स्फिंगोलिपिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के डिफेक्ट्स हो सकते हैं. वो डिफरेंट डिफेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं, और उसकी वजह से जो लिपिड के डिफरेंट क्लासेस के लिपिड्स हैं वो डिग्रेड प्रॉपरली नहीं होते. दैट्स व्हाई दिस कुड लीड टू द glycose storage diseases. One of the most rare diseases is known as the eye cell disease. It's a rare condition. All normal lysosomal enzymes are absent. It is characterized by severe progressive psychomotor retardation and a variety of physical signs, with death after occurring in the first decade. But what happened in the case of eye cell disease? Eye cell disease, as I told you, is a rare condition,
and in this case all the lysosomal enzymes are absent. What happened in case of eye cell disease? Eye cell disease is I stands for inclusion. Inclusion means something that is not degraded is going to be accumulated. Why it gonna accumulated? Due to the absence of some of the lysosomal enzymes. What are those enzymes? These enzymes, the mutant enzymes in the eye cell disease is the phosphotransferase. I told you in the last slide that during the protein targeting, all the proteins which are made on the rough endoplasmic reticulum, they are directed towards the lysosomes by attaching some signals. And that signal is the mannose 6-phosphate. If that signal is missing, means mannose becomes the mannose. Mannose remains the mannose, and there is no phosphotransferase activity is going to be taken place on the mannose. And then what happened? Your mannose becomes your mannose, remains your mannose, and the protein that is going to be attached with the mannose 6-phosphate becomes attached with the only mannose. That is why the protein that is directed to be present in the lysosome will remain there in the plasma. It will be released in the plasma. It will not be further going to be taking place or targeted to the lysosome. That's why the protein which has to be there in the lysosome for the degradation, it will not go there. So if it is not going to be present in the lysosome, it will cause the accumulation of that particular substance or biomolecules in that place where it is present, leads to the formation of different types of inclusion bodies. So in this case, the eye cell disease inclusion bodies could be seen with the microscope in the different regions of the cell, which leads to the accumulation of these inclusion bodies in different tissues. If और वहाँ जहाँ पर आपके ये inclusion bodies जाकर accumulate होंगी, वहाँ ये disorders show करेंगी. Like if these are present in the brain cells, it could lead to the psychomotor retardation, and if they are going to be in different tissues, they could cause different problems of that tissue, ultimately lead to the death occurring in the first decade. The first decade में ही आपके जो पेशेंट होगा उसकी डेथ हो जाएगी. तो यहाँ पर हमने लाइसोसोम पढ़ा और लाइसोसोम से रिलेटेड जो कुछ डिसऑर्डर थे हमने वो देखे. लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर में हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड म्यूको पॉलीसैकेराइडोसिस देखे. इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे. अभी यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये डिफरेंट म्यूको पॉलीसैकेराइड्स लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं और हमारे डिफरेंट जॉइंट्स में और म्यूकस में पाए जाते हैं, और अगर इनमें डिफेक्ट हो जाए तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स शो करते हैं जिनको म्यूको पॉलीसैकेराइडोसिस कहा जाता है. उनमें हर्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम, स्लाई सिंड्रोम, सैन-फिलिप्पो सिंड्रोम, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनकी डिटेल हम कार्बोहाइड्रेट्स वाले चैप्टर में करेंगे. इसके बाद आ जाता है लिपिडोसिस. लिपिडोसिस वाले चैप्टर में हमारे पास आ जाता है लिपिड स्टोरेज डिजीज़, जिसमें डिफरेंट गैंग्लियोसाइडोसिस हो सकती हैं और सेरेब्रोसाइडोसिस हो सकती हैं. और एंड पे हमने एक बड़ी डिजीज़ आई सेल डिजीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ रिलेटेड टू द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़. और इस डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे पास जो इंक्लूजन बॉडी है वो बन जाती है. आई से हमेशा ये याद रखना है कि इंक्लूजन बॉडीज़ बन जाती हैं और किन वजह से बनती हैं. जो प्रोटीन डायरेक्ट होकर लाइसोसोम में जाती है, डायरेक्शन कौन देता है? mannose 6-phosphate. और वो mannose को mannose 6-phosphate में कन्वर्ट कौन करता है? फॉस्फोट्रांसफरेज. म्यूटेशन हो जाती है. हम कह रहे हैं कि ऑल नॉर्मल लाइसोसोमल एंजाइम्स आर एब्सेंट. तो लाइसोसोमल एंजाइम्स में वन ऑफ द एंजाइम जो हमारे पास होंगे वो लाइसोसोम में एब्सेंट हो जाएंगे. रेयर कंडीशन किस वजह से होगी? म्यूटेशन इन दी फॉस्फोट्रांसफरेज. फॉस्फोट्रांसफरेज का क्या काम था? mannose को mannose 6-phosphate में कन्वर्ट करना.
वो डायरेक्शन नहीं देगा, जिसकी वजह से वो वहीं की वहीं रह जाएगी और मिसलीड हो जाएगी, मिसगाइड हो जाएगी प्रोटीन, और इंक्लूजन बॉडीज़ बना देगी, और फिर जहाँ पर भी वो जाके एक्यूमुलेट होगी वहाँ पर वो डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ शो करेगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. From tomorrow we will discuss other organelles uh, which are peroxisomes and mitochondria, etc. For today, this is the end of the lecture. Thank you.